माँ का खाना जब भी आप खाते हैं उंगली चाटते हैं, क्यों? कभी सोचा आपने क्यों? वो इसलिए क्योंकि माँ जब भी खाना बनाती है अपना पूरी आत्मा, अपना पूरा हृदय उस खाने के अंदर डालती है, तभी जाके वो खाना बहुत विशेष हो जाता है। कभी 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 हमारी आपकी बीवी भी बहुत शानदार खाना बनाती है। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन उनका बहुत ज्यादा प्यार आपके ऊपर आ रहा होता है। तभी कहा जाता है कि खाना यदि आप बहुत दिल से बनाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है खाना जब तैयार होता है। पर सच्ची कहना चाहूंगा यहाँ पे, जब मैं खुद का खाना बनाता हूँ तो पूरी आत्मा और हृदय के साथ बनाता हूँ, उसका स्वाद, उसका जो आनंद मुझे आता है मैं बयां नहीं कर सकता। हाय गाइस, नमस्कारम। याद होगा कि पिछले एपिसोड में एक आहार विशेषज्ञ के साथ बातचीत चल रही थी और उसी को आज मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। आए उसके पार्ट 2 को देखें, अगले भाग को देखें। इस एपिसोड के अंत से पहले मैं एक डिश, मेरी जो एक और पॉपुलर डिश है जो मेडिटेरियन किचन से बहुत इंस्पायर्ड है, वो मैं आपको बना के बताऊंगा, सिखाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी उसका आनंद लें। From this conversation, what you have been discussing at the moment, let me pick two words. One is the preparation of the food, another one is the fasting. What I have that means observed nowadays in the last few years, intermittent fasting is getting more popular all over the world. The people are preferring to eat early in the evening, and that means in the late hours, that means they are having the breakfast maybe 9 o'clock or 10 o'clock. They are preferring to keep 15 hours, 16 hours fasting on one stretch. So what you feel on that one, that means how it supports the body, the soul and the mind. The second one is that means how the preparation of the food also makes a difference, because what we say in India, that means let's suppose it depends on the mood of the food and mood of the lady who is making the food in the home. If she's angry, if she's not happy, it is going to be reflected on the food. If she's too happy, that means you can feel it on the food. So Agreed. here I would love to have your points, your highlights. So fasting can benefit in weight loss. It can benefit also in clearing your mind because it's going into shock. So when you're fasting, you're more able to, for some people, not all, you're more able to, be more attentive, be more, focused. And then once you eat your first meal, your body kind of like, okay, relaxes, it gets all those nutrients. And so um, fasting is not for everyone, but for those people who do see the benefits of it working, which I do. So, in the morning I do fasting. And I think fasting is very, very good for the body because when you fast, the body goes into shock. So it starts, burning what you already have. So for the first part of my day, I'll fast until noon, just water. And then I'll have a shake with kale, spinach, bananas, pineapples, whatever I can get my hands on that is going to be good for me. And then I'll have, a good sized dinner. And I love to make blackened tofu. So I found a way to alternate from eating meat, chicken, or pork. I found that tofu works best for me and my family. Lentils is another favorite of my daughter loves lentils. I love lentils, chickpeas. You can do so much with, a pita pocket, some hummus, fresh veggies, and you just get so much energy from that one simple, um, you know, meal. The preparation of food, I think that it comes from within oneself. Do you want to make that change? Do you want you feel better? Do you want that change in your life? Because it is a lifestyle. It's not just I'm gonna That's be the point. That's the point. And it's the lifestyle. you won't believe that a few years back, that means when I decided that means I have to be more strict on my lifestyle, I am the first person who prepared the food for myself from so many years, for lunch, breakfast and the dinner.
I prepare myself. That gives me a lot of spiritual satisfaction. I know what I am eating, and that is going to Exactly. reflect in my persona. So that makes a big difference. That makes a big It difference. it really does. And when I started culinary school, I learned that eating out was actually the worst thing for you because you don't know what's going on behind the scenes of the kitchen. You don't know if they're clean. You don't know, and most of that food is already frozen, processed. It's not good for us. But um, I'm sorry, we were programmed, meaning that we have to unprogram our minds from eating that and staying away from that and preparing food at home. But I feel that less and less people want to prepare meals at home. That's also something This that, is an increasing trend all over the world, including India. That means people are preferring to go out and out and out. But that means this is yes. not a positive sign. That means, and I'm sure that means after the few decades, the planet will be feeling the heat of that one. So that's very important Hmm. to be taken care of. One more. Yes, and it's very, Sorry, go ahead, continue. and no, and it's very important to take care of your body because we're only given one body. And I feel that if we're always mistreating our body, especially by our diet, then what do like, how long do we expect to live? Because as you mentioned, what you put into your body you are. So if I'm just putting junk food, then over the years my body will let me know, and it'll slowly start to let me know by my blood sugar or things as that matter. But I would love to become vegan 100% in the near future. I just think that it's going to take a lot of experimenting with recipes, um, spending time in the kitchen, and that, like I said, is a lifestyle that I would have to take on, and I encourage others to take it on. स्वागत है वापस चिन्मय जी के किचन में। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था मेडिटेरियन बॉल के बारे में। आज से ऑलमोस्ट 20 से 21 साल पहले जब मैं मेडिटेरियन कंट्रीज के लिए पहली बार विजिट करने के लिए गया, वहां पर जो उनका बाउल देखा, मैं हड़बड़ रह गया। कितना कितना पौष्टिक, कितना हेल्दी और कितना लाइट वेटेड। और जब मैंने उसको गूगल आउट किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट फूड हमेशा मेडिटेरियन फूड को माना जाता है। फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और साथ में बहुत ही पौष्टिक, ताजगी भरा। आए उसको मैं आज आपके साथ शेयर अप करता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि खाना हमेशा मिट्टी के पात्र में बने। हिंदुस्तान की जो किचन है उसका हमेशा एक अध्याय रहा है कि खाना मिट्टी के पात्र में क्यों। ये खाने को बहुत स्वाद देता है, साथ में इसको हमेशा ताजगी प्रदान करता है। आप विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने चाहे तो अपने घर में भी प्रयोग कीजिएगा। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ खाना की जो लॉन्जेविटी होती है ज्यादा होती है कंपैरिजन जो यूटेंसिल जिसके अंदर आप खाना स्टोर करते हैं। आप खुद देखिएगा। इसी मिट्टी के पात्र में आप देख रहे हैं कि मैंने ब्राउन राइस, साथ में किनेवा और ब्लैक राइस भी मैंने इसमें मिलाया है। आए इसको बॉईल करते हैं। ये चॉप करी हुई सलाद आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने बिल्कुल बारीक तरह से कटी हुई चुकंदर, गाजर, बेबी टोमेटो, केले, साथ में बेबी स्पैनच, और आप विश्वास नहीं करेंगे एक आहार जो मुझे बहुत पसंद है तो वो है एवाकोडा। ये वो फल इतना पॉपुलर है और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने दूसरी हांडी में ऑलरेडी बॉईल कर लिया है ब्राउन पास्ते को और कुछ मशरूम को। आए इसे सलाद के साथ मिक्स करें। इसमें मैंने जो बॉईल किए हुए मशरूम, ब्राउन पास्ता और जो चावल, किनेवा और ब्लैक राइस जो बॉईल करने के रखे हुए थे वो उसमें साथ में मैंने मिक्स किए हैं। अब समय है लापालाप यमी ड्रेसिंग का। दही से ड्रेसिंग, और ऑफ कोर्स दही इस खाने को और लजीज बनाता है, या यूं कहूं बच्चों की भाषा में जो बोला जाता है यमी बनाता है। इसके ऊपर साथ में चिया सीड की ड्रेसिंग, चिया सीड्स, और साथ में थोड़ा बहुत हम काला पेपर डालते हैं
पर अभी डिश कंप्लीट नहीं हुई है। वाओ, वेजिटेरियन बाउल बिल्कुल तैयार। साथ में सीवीड भी आप देख सकते हैं और बहुत हेल्दी होता है। हिंदुस्तान में भी मिलता है, इसको भी आप खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप में एक संपूर्ण, भरपूर, पौष्टिक और साथ में स्वास्थ्यमय डिश। आज ही प्रयोग कीजिए और जरूर शेयर कीजिएगा आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक मेल के थ्रू। धन्यवाद।